Good afternoon to all. and welcome all to today's session. I'm sure my voice is audible. Just type yes on the chat box. अगर मेरी वॉइस एंड मेरी आवाज़ एंड स्क्रीन सबको विजिबल है जस्ट टाइप यस ऑन द चैट बॉक्स. सो दो कर रहे हैं दे कैन सी द बॉटम राइट कॉर्नर पे चैट सेक्शन है जहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यू कैन जस्ट टाइप यस ऑन द चैट बॉक्स. So we are just waiting for few more participants to join in. Just give me a minute. So जो लोग वेबएक्स से अटेंड कर रहे हैं दैट इज आई हैव गिवन यू द यूट्यूब लिंक ऑल्सो because this session will be in a recording mode and means ये session बाद में भी आप drop out or in case you want to reach 344 and currently trading at this 23409 and the bank nifty is right now it is 48,706. Now with this I'll hand over the session to Mr. Karan Pai. Now means talking about this session, that is every day we release the this concept of the day that indicators क्या होता है या candlesticks क्या होता है. And then to summarize this every Friday at 2:30 p.m. we conduct the session that जो भी हमने पूरा week में publish किया है, then means how you can take care in the real time this in the charts also. So with this I'll hand over the session to Mr. Karan Pai. Karan, all over to you now. थैंक यू रोहित. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आप लोग आए उसके लिए थैंक यू. सो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम लोगों ने जो आज तक कवर किया है या जो प्रीवियस वीक में हम लोगों ने जो कवर किया था उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं. सो सबसे पहले हम लोगों ने 3 ब्लैक क्रोस कवर किए थे. अगर आपको याद है तो इट इज बेसिकली अ डाउन मूव आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप मूव. सो 3 ब्लैक क्रोस उसे क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्रोस आर ब्लैक एंड दे बाउंस डाउन टू कैच देयर फूड और प्रे वॉट एवर इट इज. एंड जब भी नेगेटिव कैंडल्स बनते हैं तो उसका या तो फिर कलर रेड होता है या ब्लैक होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज 3 ब्लैक क्रोस. एंड जस्ट बिफोर वी गेट डीपर इनटू इट, मेरी आपसे एक सजेशन या रिक्वेस्ट होगी कि आई होप आप लोग ये पढ़ते हो एंड आपको कहीं ना कहीं ये यूज में आया हो. एंड अगर इसके रिलेटेड आपको कुछ फीडबैक देना है कि इसमें ये चेंजेस आप कर सकते हो, ये थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, लैंग्वेज थोड़ा मेलो डाउन करना है, सो प्लीज़ लेट अस नो. हम लोग वो चेंजेस वर्क थ्रू करने की कोशिश करेंगे. एंड जो कंटेंट है उसके डिलीवरी में भी अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी आप हम लोग को मेंशन कर दीजिए. हम लोग वी विल ट्राई एंड वर्क आवर कंटेंट अराउंड द रिक्वायरमेंट. सो 3 ब्लैक क्रोस का एग्जैक्ट ऑपोजिट है 3 वाइट सोल्जर्स. सो 3 वाइट सोल्जर्स से भी हम लोग बोलते हैं सोल्जर्स दे मार्च अहेड एंड बुलिश कैंडल्स जो बनते हैं दे आर आइदर वाइट और ग्रीन. सो दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज 3 वाइट सोल्जर्स. देन हमने ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम पैटर्न्स देखे थे. सो ट्वीजर टॉप बेसिकली हम लोगों ने बोला था जो चिमटा होता है आपके किचन में उसको एक रिजेंबल करता है वो. सो ट्वीजर टॉप की खासियत ये है कि एक जो ट्रेंड रिवर्सल जब भी पॉइंट आउट होता है या ट्वीजर ये पैटर्न जब भी बनता है तो दोनों कैंडल्स के हाई जो है काफ़ी सिमिलर होते हैं. एक हाथ पॉइंट इधर उधर ठीक है बट इट शुड नॉट हैपन कि आप से 1250 का कल का हाई था और आज का 1270 1280 है. सो तकरीबन सेम होना चाहिए हाई. ट्वीजर बॉटम एग्जैक्टली ऑपोजिट. सो ट्वीजर टॉप जैसे हम लोग को पता है कि इट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ एन अप ट्रेंड. ट्वीजर बॉटम जो है दैट फॉर्म्स एट द एंड ऑफ अ डाउन ट्रेंड. सो द ओनली डिफरेंस इज कि आप ये कैंडल के एग्जांपल में भी आप देख सकते हो जो हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है. सो यहाँ पर कंसिस्टेंटली अप मूव था, उसके बाद देयर वाज अ रिवर्सल एंड अप मूव के बाद जब भी हम लोग रिवर्सल बोलते हैं मतलब द मार्केट इज ट्रेंडिंग डाउन. एंड ट्वीजर बॉटम में अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट डाउन मूव थी. आफ्टर अ डाउन मूव दीज टू लोज मैचिंग एंड एक बुलिश कैंडल बन गई वहां पर एंड देन द मार्केट रिवर्स. एंड आफ्टर अ डाउन मूव रिवर्स अगर जब भी हम लोग बोलते हैं तो इट मींस इट मूव्ड अप. देन वी मूव्ड ऑन टू टेक्निकल इंडिकेटर्स. नाउ इंडिकेटर्स हम लोगों ने पहले भी बोला है कि तकरीबन 150 145 149 150 इंडिकेटर्स के आसपास है. सो आज हम लोग जानेंगे कि इंडिकेटर होता क्या है बेसिकली. ठीक है. सो जब भी हम लोग कभी भी एक चार्ट देखते हैं स्टॉक का, इट इज बेसिकली द प्राइस ओपन हाई लो क्लोज वैल्यू
फॉर्मूला में मतलब एवरी इंडिकेटर हैज अ फॉर्मूला, एंड वो फॉर्मूला में क्यों डालते हैं, बिकॉज आइदर वी वांट टू कंपेयर टुडेज क्लोज विद द क्लोज ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, टुडेज रेंज विद द पास्ट फ्यू डेज। ये जब भी हम लोग को करना रहता है, सो जब भी हम लोग एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में ये डेटा डालते हैं, एंड देन जो एक आउटकम आता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑसिलेटर और अ फॉर्म ऑफ इंडिकेटर। सो इंडिकेटर में भी तरीक तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि जो भी प्राइस डेटा है, जब हम उसे फॉर्मूला में डालेंगे, जब भी हम उसे एक स्टैटिस्टिकल एज देंगे, दैट इज बेसिकली अ टेक्निकल इंडिकेटर। सो अगर आपने हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डे पढ़ा होगा, तो उसमें भी हमने ये मेंशन किया है कि जब भी हम लोग उसे कैलकुलेट मैथमेटिकल फॉर्मूला में हम लोग डालेंगे, तो इट बिकम्स अ इंडिकेटर। अभी इंडिकेटर कई तरह के होते हैं। एक तो आपको इंडिकेटर जो है वो आपको या तो फिर ट्रेंड बताएगा, मोमेंटम बताएगा, वोलेटिलिटी बताएगा, ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है वो बताएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ मोमेंटम। एंड देन इट ऑल्सो एड्स वैल्यू टू योर एनालिसिस। कैसे, ये हम जानेंगे अभी, एंड एज वी गो हेड। सो जैसे मैंने बोला, ट्रेंड इंडिकेटर बेसिकली आपको ट्रेंड बताएगा एज टू वेयर द मार्केट इज हेडिंग, एज टू व्हाट द बेसिक ट्रेंड इज, अप मूव है, डाउन मूव है, इज कंसोलिडेट हो रहा है वो। मोमेंटम आपको बताएगा कि इन अ पर्टिकुलर मूव मोमेंटम आपका इंक्रीज हो रहा है। मोमेंटम इज बेसिकली, अगर आप कैंडल का सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे डालना है, अप मूव है, कैंडल की साइजेस बड़ी है, मतलब देयर इज मोमेंटम। एंड अप मूव है, कैंडल की साइजेस छोटी है, मतलब मोमेंटम एग्जॉस्ट हो रहा है। सो मोमेंटम आपको बताएगा। देन वोलेटिलिटी, कि ये मार्केट कितना मूव करता था हिस्टोरिकली, अभी कितना मूव कर रहा है, दैट इज ऑल्सो बेसिकली वोलेटिलिटी। तो उसके भी इंडिकेटर्स होते हैं। अभी मोमेंटम इंडिकेटर्स में मोस्ट कॉमन जब भी ध्यान में आता है, तो वन इज RSI एंड स्टोकेस्टिक्स। सो जब भी हम लोग ये इंडिकेटर्स देखते हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें एक ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन होता है। तो पोटेंशियल रिवर्सल यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज every time the indicator goes in an overbought zone, goes in an oversold zone, doesn't mean कि यहाँ से reverse होगा। It could also mean strength. So we'll dig deeper into all these concepts as we go ahead. So now decision making में ये आपको help करता है। So अभी instances आपको, जैसे moving average है, that is a very classic and a very simple example of a trend indicator. आप पिछले 10 दिनों का प्राइस ले रहे हो, एंड देन यू आर समिंग इट अप एंड देन डिवाइडिंग इट बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट यू पीपल आर लुकिंग एट। से फॉर एग्जांपल, अगर मुझे से एक 20 डे का एवरेज निकालना है, करेक्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेरे पास 20 दिन का क्लोज प्राइस है, मैं उसे ये क्लोज प्राइसेस पे अप्लाई करता हूँ एंड ऐड करता हूँ, एंड देन डिवाइडेड बाय 10 या 20, सॉरी 20 डे का अगर हम लोग इंडिकेटर निकाल रहे हैं, वी आर डिवाइडिंग इट बाय 20। सो जो एवरेज प्राइस आता है, वो मुझे बताता है कि पिछले 20 दिनों में क्लोजिंग प्राइसेस का अगर मैं एवरेज लूं, तो एक्स वैल्यू था। एंड देन आई कंपेयर इट टू द प्राइस, कि करंट प्राइस कहां पर है। तो मुझे पता चलता है कि पिछले 20 दिनों के एवरेज से ये प्राइस ऊपर है या नीचे है। सो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल। सो आगे भी हमारे पास एग्जाम्पल्स है, RSI है, MACD है। नाउ MACD इज समथिंग दैट विल बी कवरिंग probably next week, but today we'll be covering more on moving averages, and because हम लोग moving average करेक्ट कर ही रहे हैं, हम लोगों ने Bollinger Bands में इसमें ऐड किया है। सो वो भी कैसे चलता है, वो भी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। नाउ कमिंग ऑन टू इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। सो यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी है? वी हैव रिकैप्ड व्हाट वी हैव डन लास्ट वीक। हम लोगों ने इंडिकेटर पे इंट्रोड्यूस किया। प्लीज पुट इन योर type your queries in your chat box, and we'll continue from there. So we'll take a 30-second pause here, and till now, if you have any queries on the tweezer bottom pattern, tweezer top pattern, then three white soldiers and three black crows, then you can put in the chat box, so Karan will be able to answer it. So those again, I'll just say that those who are attending this session from our WebEx, they can on the bottom right corner, वहाँ पे chat section है, you can put there. And those who are attending this from YouTube, then you can go into the live chat section and you can post your queries there. Also, now coming to this important indicator, we'll be also showcasing you in the real life examples also कि charts में कैसे plot करते हैं and how you have to identify the trend. Yeah, Karan, all over to you. Yeah. सो इसकी एक झलक आपने हमारे प्रीवियस वेबिनार में देखी होगी, मतलब जो कल हम लोगों ने कंडक्ट किया था, जहाँ पर वी वर कंपेयरिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMA एंड SMA।
ऐसे सब चीज़ों में आपने कहीं ना कहीं इसे देखा होगा कि हाउ वी प्लॉट, बट टुडे विल डिग अ बिट डीपर. सो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर सबसे पहले होते हैं मूविंग एवरेजेस. मूविंग एवरेजेस वाई, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सिंपल एवरेजेस. सो अभी अगर मैं कोई भी अपना चार्टिंग प्लेटफॉर्म खोल दूँ, ओके, एंड मैं यहाँ पर देखता हूँ कि व्हाट इज, अभी ये सिर्फ सिर्फ प्राइस देख के मुझे पता नहीं चलेगा कि मार्केट कैसे पोजीशनड है, करेक्ट. तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक सीधा मूविंग एवरेज डाल देता हूँ. मूविंग एवरेज. सो यहाँ पर आपको बहुत लंबी सी लिस्ट आएगी मूविंग एवरेजेस की. सो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ द डे निकाला है, उसमें हम लोगों ने सिंपल दो रखा है. वन इज सिंपल मूविंग एवरेज, अनदर वन इज एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. सो यहाँ पर अगर मैं सिंपल एक मूविंग एवरेज जैसे मैंने प्लॉट कर दिया, इसने मुझे 9 पीरियड मूविंग एवरेज दिया है. 9 पीरियड मूविंग एवरेज अभी हम लोग बोलते हैं, ये पिछले 9 दिन का क्लोजिंग लेता है, सम अप करता है एंड देन डिवाइड्स इट बाय 9. सिंपल सी मीन है. तो यहाँ पर मुझे पता चल जाता है कि ये एवरेज के, से फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है पिछले 9 दिनों के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब जो सेंटिमेंट है थोड़ा नेगेटिव हो जाता है. वहीं पर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये अप डाउन कर गया है. I'm sorry. I'm assuming everybody has a bad throat in Mumbai right now. So मेरी भी कोई हालत डिफरेंट नहीं है. So carrying on, continuing. So 9 day average, मुझे ये पॉइंट पर मैंने पॉइंट आई रियलाइज दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो प्राइस है वो 9 डे एवरेज के ऊपर गया. एंड देन वहां से एक थोड़ा अप मूव था, नीचे आया एंड देन देयर वाज whipsaw. Now 9 days in general, I personally don't find any practical application, so that is why I use either 5 day, 13 day or 21 day. Now again, जब मैं आपको ये सब वैल्यूज बोल रहा हूँ, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव सीन इन द पास्ट. एंड अगर आपको इसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानना है या समझना है या आपको इसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है, then what I would suggest is first understand the psychology behind selecting the periodicity. करेक्ट. सो अगर आप एक पर्टिकुलर पीरियड का मूविंग एवरेज अगर प्लॉट कर रहे हो, तो आप ये समझिए कि आप वो प्लॉट क्यों कर रहे हो या वो पर्टिकुलर पीरियड आप क्यों ले रहे हो. जब मैं 5 बोल रहा हूँ, आई एम प्लॉटिंग 1 वीक का वैल्यू. सो yeah, so that is how moving averages are plotted. Now simple moving average हमने देख लिया कि it is basically a simple mean. अभी सिंपल मीन जब मैं बोलूँ, मेरे पास 9 दिन का अगर वैल्यू है, करेक्ट. सो 9 दिन का वैल्यू, मैं सारे 9 दिन के वैल्यूज को इक्वल वेटेज दूंगा. बट देन देर इज अ प्रॉब्लम. अभी आप समझिए कि अगर 10वें दिन कोई बड़ा मूव आया, करेक्ट. सो बिकॉज इट्स अ सिंपल मीन, 1 to 9 आपने कैलकुलेट किया बिकॉज यू आर कैलकुलेटिंग द 9 पीरियड मूविंग एवरेज. 1 to 9 का फर्स्ट डे से लेके 9th डे तक का आपने एडिशन करके यू डिवाइडेड इट बाय 9. जैसे ही 10th डे आता है, फर्स्ट डे का डेटा जो आपका ड्रॉप ऑफ होता है. सो सेकेंड डे से 10th डे का बाद में कैलकुलेट होता है. So I'll just show it to you in Excel as to how that is done. I'm sorry. 5 डे हम लोग लेते हैं यहाँ पर. ओके, 5 दिन है एंड हमारे पास से 1250 फर्स्ट डे का वैल्यू. जीरो. एंड देन नेक्स्ट डे आपके पास है 1255, देन है 1230, देन 1270. Now these are random values that I'm taking, and then final आपके पास है 1200, सॉरी 1265, करेक्ट. सो आप एक ही करोगे, इसे इक्वल टू सम. I'll just zoom in. Yeah, is equal to sum. ये कर लूंगा एंड देन बिकॉज देर आर 5 ऑब्जर्वेशंस, आई विल राइट 5 हियर. 0 is equal to this divided by
सो ये अगर मैं ये सारे वैल्यूज का एवरेज लूं तो दैट कम्स टू अराउंड 1254. नाउ देयर इज अ सिक्स्थ डे, करेक्ट. सो मैं यहाँ पर एक रो ऐड कर देता हूँ. ये हुआ मेरा सिक्स्थ डे एंड उस दिन का प्राइस था से 1270. ओके. नाउ व्हाट आइडियली अगर मैं 5 पीरियड का एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरे पास 6 दिन का डेटा है, देन इट विल जस्ट ड्रॉप ऑफ दिस, करेक्ट. एंड देन मेरा सम होगा डिवाइड बाय 6. ऐसे मेरा वैल्यू चेंज होता है. सो वन ऑफ द पिटफॉल्स ऑफ अ सिंपल मूविंग एवरेज इज दैट जब भी नया डेटा आता है, पुराना डेटा जो है उसे वो ड्रॉप कर देता है. एंड इसके वजह से आपके मूविंग एवरेज के वैल्यूज जो है वो थोड़े ड्रॉप कर देता है. एंड इसके वजह से आपके मूविंग एवरेज के वैल्यूज जो है वो थोड़े ऊपर नीचे होते हैं. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ ड्रॉप ऑफ इफेक्ट. So this was one of the pitfalls of SMA. That is why EMAs were introduced. EMAs basically क्या करते हैं, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है. जब भी हम इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियली वेटेड, मतलब ये करंट वैल्यू पे बहुत ज्यादा वेट देते हैं. नाउ व्हाई इज दैट? सो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, यू नो देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट फॉल एंड देन ऑल ऑफ अ सडन एक काफी पॉजिटिव डे है. Your simple moving average will take time to react, but your exponential moving average will immediately react. Why? Because ये जो आपका sixth day so sorry, तो ये जो आपका सिक्स्थ डे का वैल्यू है उस पर वेट बहुत ज्यादा है. सो दैट इज वाई सिक्स्थ डे के प्राइस के हिसाब से इट विल रिएक्ट मच फास्टर. सो यहाँ पर हमने 5 डे SMA प्लॉट किया है. मैं आपको EMA प्लॉट करके दिखाता हूँ 5 डे. ओके, SMA में किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, बोलना है, नाउ वुड बी द राइट टाइम. So if you have any queries, anything on the SMA side, that is on a simple moving average, then you can put in the chat box. Also, this links are shared on the chat box to the like where you can access the simple moving average, then the this exponential moving average. Excuse my coughing guys, but गला खराब है मेरा and I have to continuously talk, so it leads to a lot of coughing. Yeah. सो अगर आप देख सकते हो, ये ब्लू लाइन जो है दैट इज माय सिंपल मूविंग एवरेज एंड ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज माय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. तो दोनों की पीरियोडिसिटी 5 है, बट डिस्पाइट दैट अगर आप देखो तो दोनों में देयर इज अ डिफरेंस व्हेनेवर देयर इज अ प्राइस मूव. अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो गैप अप था, ये ब्लैक लाइन रिएक्टेड फास्टर, इट मूव्ड हायर फास्टर एज कंपेयर टू द ब्लू लाइन. सो जब मैं ड्रॉप ऑफ इफेक्ट एंड गिविंग मोर वेटेज टू द करंट वैल्यू बोलता हूँ, दिस इज व्हाट आई मीन. अभी इसके अपने कैलकुलेशन है एंड अगर आप वो पीडीएफ में जाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है. इट्स अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट नॉनदलेस आपको इतना समझना है कि एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है आपके प्राइस चेंजेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करेगा एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज. सो दिस वॉज अबाउट EMAs. अभी आपको अगर कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, नाउ दैट यू नो बोथ SMA एंड EMA, I'll pause here for a good time. अगर आपको कुछ पूछना है, now would be the right time. Start putting the messages in your chat box. So Karan, we are having one question from our YouTube channel that are moving averages recommended for volatile periods? So yeah. सो रोहित या जिसने भी ये सवाल पूछा है, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो आपको एक बात समझनी है, मूविंग एवरेजेस जो है वो प्राइस के क्लोजेस्ट पे, करेक्ट. सो जब भी वॉलेटाइल मार्केट होता है तभी मूविंग एवरेजेस आपके सबसे बढ़िया चलेंगे. जब भी मार्केट कंसोलिडेट होता है, दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. नाउ आई विल जस्ट सी इफ देयर इज अ फेज ऑफ कंसोलिडेशन. या ओके, ये फेज में अगर आप देखोगे मार्केट बेसिकली साइडवेज था एंड लुक एट हाउ द प्राइसेस रिएक्ट टू द मूविंग एवरेज. एवरी डे ऐसे सिचुएशन होता है कि इट गोज बिलो एंड देन द नेक्स्ट डे इट इज अबव, बिलो अबव, बिलो अबव. सो ऐसे टाइम पर a moving average it tends to confuse you.
दैट इज वाई जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है, जब भी मार्केट में मोमेंटम होता है, दैट इज व्हेन यू कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ मूविंग एवरेजेस. Second question we are having, that is from a WebEx channel, that is EMA. Is it weightage average? If so, what is the weight for recent period? So, what I would suggest is go through the PDF link that Rohit has just shared. So, and yes, you are correct. EMA is a weighted average, and more weightage is तो उसका भी एक calculation होता है the weightage का. So that we have explained in the PDF. What I would suggest is, because वो बहुत ज़्यादा technical होगा, and we also have only a few more minutes left till we sum up the webinar. What I would suggest is एक बार आप बस उसे go through कर लीजिए, and अगर आपको कुछ query है, you can ask that question in the next webinar. Second, we are having which was we can use for the betterment, SMA or EMA? I have personally have been using EMA. अभी SMA के अपने pitfalls हैं. Pitfalls जब मैं बोलूँ तो मैंने जैसे आपको calculation में दिखाया कि there is that drop off effect, जिसके वजह से SMA का जो है वो value बहुत जल्दी change होता है. Then also because it is equally weighted, वो सारे दिनों के डेटा को एक ही amount of weightage देगा. मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, आज 10 तारीख है, 10th जान है, अगर हम लोग 10 डे मूविंग एवरेज प्लॉट करें रिलायंस का, करेक्ट, वो फर्स्ट डे के डेटा को भी उतना ही वेटेज देगा, फिफ्थ डे को भी उतना ही वेटेज देगा, एंड आज के प्राइस को भी उतना ही वेटेज देगा. सो दैट इज वन मूविंग एवरेज. बट अगर आप ईएमए देखोगे, ईएमए जो है वो पिछले 9 दिनों के डेटा को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेटेज देगा, बट आज के डेटा को वो ज्यादा वेटेज देगा. And because you're using moving averages as your trading system, what I would suggest is the moving average should move faster if the current price is if the current movement is faster. Current movement is faster as in, अगर आप समझिए ये कैंडल का जैसा दिन है, मतलब ओवर एक्स नंबर, अगर समझिए इसका एवरेज वैल्यू आ रहा था 1440 का, एंड वन फाइन डे मूव टू 1490. So in this case your EMA will react faster to the price movement. So I personally would prefer using a EMA over SMA. Okay, so now we can go ahead for the Bollinger now. Yeah. So now comes the interesting part. So अभी मैं यहाँ पर EMA निकाल देता हूँ because Bollinger में you normally plot a SMA. But ऐसा okay. Now one more question I have that I want to ask the audience is, हमने यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स थे, हमने क्लोज पर SMA EMA जो भी है वो अप्लाई किया था. Do you think we can use the same logic for either plotting it over the highs or lows, जैसे हमने यहाँ पर पूरे क्लोजिंग प्राइसेस पे यूज किया था SMA EMA दोनों? आपको लगता है कि क्या हम इसे ओपन नहीं सॉरी हाई एंड लो पर भी कर सकते हैं? जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. या सो आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन. सो यहाँ पर देखो, अगर मैं ये इसके सेटिंग्स में जाऊँ तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि इनपुट जो है वो हमने क्लोज लिया हुआ है, करेक्ट. Do you think we can apply moving average formula on high and low? Okay, yes. A few more replies. You are absolutely right. You can simply change the parameter to high. So अगर आप highs पर calculate करोगे तो obviously आपकी values change हो जाएगी. But then you should not compare it to the close. So you should probably compare it to the highs of the session. But then again, अभी for example there are a few systems that I also personally use, जहाँ पर हम लोगों ने एक envelope kind of thing बनाया है just by applying moving averages to the high, low and the close, to understand where the price is currently placed with regards to the open, high, low, open nahi, the high, low and close of the past XYZ days. So that is one more application of a moving average. Now we'll quickly go to something called as Bollinger Bands. And Bollinger Bands, I'm assuming आपको basic idea होगा as to what a
डज दिस चार्ट सीम फेमिलियर? ये वाला आपने बहुत सारे रिपोर्ट्स में देखा होगा, आपने बहुत सारे जहाँ से भी आपने टेक्निकल सीखा होगा, आपने उनसे उनके मुंह से भी ये बातें सुनी होगी कि बॉलिंजर बैंड्स स्क्वीज हो रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, राइडिंग द अपर बैंड, राइडिंग द लोअर बैंड. आर यू गाइज अवेयर ऑफ व्हाट बॉलिंजर बैंड्स आर? दैट इज ऑल आई वांट टू, यस या नो बता दीजिए बस प्लीज. ओके, फेयर इनफ. सो आई कैन अज्यूम कि आप लोग को बेसिक आइडिया इसका होगा बॉलिंजर बैंड्स का. सो बॉलिंजर बैंड्स में आपको बोलता हूँ कैसे चलता है. जैसे हमने यहाँ पर मीन कैलकुलेट कर लिया है, बिकॉज जब भी हम लोग 20 डे SMA प्लॉट करें, वी आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ द पास्ट 10 days. सो जितने लोग भी यहाँ पर से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो दे नो देर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब अगर ये मीन है तो प्राइस उसके ऊपर नीचे जाता है, देन यू फाइंड आउट, ये बहुत क्रूड लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, जब भी उसके ऊपर नीचे जाता है, यू ट्राई टू फिगर आउट कि ये कितना ऊपर एंड कितना नीचे जाएगा. मतलब एक पर्टिकुलर परसेंटेज आप लेते हो कि ओके दिस इज माय टॉलरेंस लेवल, देन देयर इज 2 स्टैंडर्ड डिविएशन जिसमें तकरीबन 88 या 90% प्राइस मूव्स जो है वो कंटेन होते हैं. अगेन डोंट कोट मी ऑन दैट, बट दिस इज व्हाट आई रिमेंबर. एंड देन देयर इज 3 स्टैंडर्ड डिविएशन जिसमें लगभग 99% जो है वो प्राइस कंटेन होता है. सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज, ये अगर मेरा मीन है तो ये ऊपर नीचे कितना मैं उसे बफर दे सकता हूँ. नाउ दिस इज अ वेरी क्रूड लैंग्वेज, बट दिस ये जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं कितना इसे बफर दे सकता हूँ, दैट मीन्स कि अगर ये मेरा मूविंग एवरेज वैल्यू इज एट से 1470, ऊपर नीचे मैं कितना मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, या कितना मैं इसे ये पर्टिकुलर मीन से डीविएशन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डीविएशन. Just give me a second. Yeah. So that is basically a standard deviation. अभी अगर आप मुझे बोलो कि स्टैंडर्ड डिविएशन में what is Bollinger Band expansion, what is contraction. So basically जब भी हम लोग Bollinger Bands plot करते हैं around the moving average, we also take into consideration the volatility. So upper band and lower band जो है, that is basically the middle band plus 2 into standard deviation if you are applying the standard 2 factor standard deviation, 1 into standard deviation if a standard deviation is 1, and 3 into standard deviation if a standard deviation is 3. So जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है, दीज बैंड्स दे टेंड टू रिएक्ट. अभी से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन एन एवरेज 50 पॉइंट से आपका मूव हो रहा था, 50 रुपए से आपका मूव हो रहा था एंड कंसिस्टेंटली मूव हो रहा है, देन योर बैंड्स विल स्टार्ट श्रिंकिंग. बट वन फाइन डे द मूव इज रियली बिग. सो बाद में क्या होता है कि इट देन फैक्टर्स इन फॉर द वॉलेटिलिटी. दैट इज व्हेन योर बैंड्स दे टेंड टू एक्सपैंड. अगर आप जैसे यहाँ पर देखो तो देयर वाज अ बिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड देन देयर वाज अ बिट ऑफ एक्सपेंशन. दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन एक्सपेंशन. यहाँ पर एक थोड़ा छोटा सा फेस एक कॉन्ट्रैक्शन का रहा, द प्राइसेस दे केप्ट ऑन मूविंग, सो इट वाज एक्सपेंडिंग फॉर अ व्हाइल एंड देन इट स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग. व्हाई? बिकॉज द वॉलेटिलिटी काइंड ऑफ वेंट डाउन. सो दिस इज बेसिकली अ Bollinger Band. अभी फॉर दोज ऑफ यू who are going to use it as a simple strategy, do not get too much into the formula. But अगर किसी को एकदम मैथमेटिकल इंक्लिनेशन है, जानना है कि ये कैसे काम करता है एंड ऑल दोज थिंग्स, देन डू चेक द PDF लिंक दैट वी हैव शेयर्ड इन द चैट बॉक्स. उसमें हम लोगों ने थोड़े डिटेल में इसे एक्सप्लेन किया है. नाउ मैं इतना बोलूंगा कि इसे यूज कैसे करते हैं. सो हम लोग को इतना तो पता चल गया कि बॉलिंजर बैंड्स जो है दे फैक्टर इन फॉर द वॉलेटिलिटी. सो नाउ वन माइट आस्क कि अगर ये ऊपर जा रहा है डज इट मीन ओवरसोल्ड? अगर ये नीचे टच हुआ डज इट, सॉरी ओवरबॉट ऊपर जा रहा है तो, एंड अगर ये नीचे टच हुआ डज इट मीन ओवरसोल्ड? देन द सिंपल आंसर इज नो. अगर at any point of time if the prices are going up and if band is also expanding, yeah, the band in general is moving up, matlab there is strength in the underlying, and vice versa in case it is falling. सो अगर आपने हमारा PDF आज का देखा होगा या जब ये आएगा तभी अगर आप देखोगे, सो यू विल सी वी हैव मेंशन समथिंग कॉल्ड एज राइडिंग द बैंड, बैंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन.
राइडिंग द बैंड तभी होता है व्हेन इट इज कंसिस्टेंटली, अभी फॉर एग्जांपल ये प्राइस में आप देखिए यहाँ पर इट टच द अपर बैंड, मतलब जो एक टॉलरेंस लेवल है उसका अपर लिमिट हिट हो गया, बट देन टू बिकॉज देयर वाज इनफ स्ट्रेंथ इट केप्ट ऑन मूविंग, सो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ राइडिंग द अपर बैंड, correct. This is a classic example of riding the lower band. Now one of the things about moving average and its Bollinger Band is that जब भी ये ऊपर जाकर जब भी नीचे आता है, ideally the middle band acts as a support in case the price is above the moving average and acts as a resistance in case the price is below a moving average. Now ये पूरा information मैं आपको pass on नहीं कर पाऊंगा. I would seriously recommend that you guys read about Bollinger Bands from our one pager that we have published today. And अगर आपको कुछ query है, either you can ask now or read through it and then ask us later. So we'll open up the floor for Q&A and then call it a day अगर किसी को कुछ query नहीं है तो. So if you have any queries, anything, then you can put in the chat box. Now, already in the chat box, we have our team had already shared with the PDF links on the Bollinger Bands and SMA and EMA. So request you to please save it and you can go through it. And if you will be having any questions, anything, then again on the next Friday at 2:30 p.m. we are again conducting this session. Those who are attending this session from our WebEx channel for this session. So here is the link for the YouTube on the YouTube, and you can click on the link and do like and subscribe the channel so that you can get the notification about our upcoming sessions in case you are missing out for the registrations. So if you have any queries, anything, then you can put in the chat box. It's a power pack 30-minute session to give you the clarity on the indicators, important indicators क्या होते हैं market में and कैसे उसको follow करना चाहिए. Now in the next week again we'll be publishing some of the new other indicators also, जैसे VWAP क्या होता है या Echinacea क्या होता है या फिर means like RSI कैसे means RSI से देख के कैसे decisions लेते हैं and about the stochastics. So many much more things are coming into the on the way, so that we'll be covering in this next sessions. So do let us know if you'll be having any queries, anything. Then means either you can put the in the chat box right now, or later on this next week we are again conducting the session. You can post it there also. So we will wait for a 30 seconds or so, and then we will call it for a day. And please do share your feedbacks. आपको जो भी feedback देना है, if it is positive for you then positive. अगर आपको कुछ उसमें changes चाहिए तो changes भी recommend कीजिए. We'll try and make some changes. So Thirumal ji, those who are attending this session from our YouTube, I would request you that once we done with the session, then within a half an hour or 30 minutes or so, this links will be get updated in the comments section, and so that you can access the PDF. Or I will just try to share it through the YouTube to the YouTube users also. Just give me a minute. So if you have any queries, anything, then you can put in the chat box. Meantime, I'm just sharing the link on the YouTube also about this PDF that what we have covered today. Also, do remember that you will be receiving the notifications through in your mobile app that about the new types of indicators. So do click on that and read the concept of the day, so that means you can get the knowledge, and once we are on this Friday, then we can summarize that whatever the things we have covered it. So Tirumalaji, for you, there is a link. You can just
save this link and you can view it this later for the Bollinger Bands. So with this, we'll call it for the day. Thank you so much everyone for attending that session and taking out the time. And thank you, Karan, for making it is in an easier way to explain the SMA, EMA, and Bollinger Bands. Do remember that we'll be coming with the next week. That is means every week we conduct these types of sessions. So you can simply click on this. That is simplehaiaccessdirect.in, and under the learn section you can find the session. So I'll just share my screen so that I can show it to you, show it everyone. Just a minute. So once you visit to the simplehaiaccessdirect.in, you can click on this learn section, and under the e-classroom you can register for the upcoming sessions. Now this is for the Thursday, that is technical analysis session was there. Now every Monday, Thursday and Friday we conduct the session, and Monday and Thursday is our this webinar on the Nifty 50 and the index expiry strategy, and Friday we summarize on the technical analysis. So in case you miss the mailer or you miss the notification, so anytime you can come into this learn site and you can register for the session. For the next session, that's for the upcoming week, this site will get updated within 30 minutes or so. So with this, thank you everyone for attending today's session, and do like and subscribe our channel. Thank you, Debashish, for your response. It means a lot to us. Yeah, thank you so much for the feedback. So I've already for the people like who are attending the session from our WebEx channel, I've already shared with you the link. So in case like you want to recap the session, you can go through it, and it is already recorded in our YouTube channel. So thank you so much and happy weekend, and see you on this Monday at 12 p.m. session. Thank you all.